In today's episode, I'm going to answer questions on how do you control your urge to eat unhealthy food, especially during the evening time. I'm also going to answer questions on how do you generate consistent income in your respective business. And the last question that I'm going to answer in today's episode is how do you handle yourself in a situation where people at your workplace or your colleagues are not treating you right. These are the questions that I'm going to answer in today's episode. So if you would like to hear my response to all these questions, then you know what you need to do. You just got to stay till the very end of this episode. Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum. I welcome you to the 5th episode of Relentless Talk with Ramneet. Just like every other episode, in this episode also, I'm going to answer 3 questions. So let's get started with the first question that we have for today. So Chaitali, could you please read out the first question that we have? So the first question is from Vedani from Mumbai through Facebook. She's asking that it's been a long time since I'm trying to control my urge to eat unhealthy food. Sometimes I'm successful as well in doing that during the daytime, but I have noticed that my urge to veg on junk or any other form of unhealthy food becomes stronger, especially in the evening or night. I find it really difficult to control myself in the evening no matter how much willpower I use. What can I do to break this cycle? So वैसे दो रीजन हो सकते हैं आपको जो शाम को आपकी अनहेल्दी फूड के लिए टेम्पटेशन या क्रेविंग्स होती है. पहले आपने ये बोला कि मुझे दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती टू फॉलो द राइट न्यूट्रिशन, टू फॉलो द राइट मील प्लान, पर शाम को आपको अनहेल्दी फूड की बहुत क्रेविंग्स होती है. 2 कारण. पहला कारण, क्या पता आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करा रहे हो दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग योर मॉर्निंग और ड्यूरिंग योर आफ्टरनून टाइम, बिकॉज ऑफ इट जब शाम होती है एंड यू नॉट गिविंग योर बॉडी द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, आप अपने आप को स्टार्व करते हो या कम खाते हो, तो शाम को जब आपकी बॉडी को भूख लगती है, इट बिकम्स ऑल द मोर टेम्पटिंग फॉर पीपल टू गो फॉर अनहेल्दी फूड. व्हाई? बिकॉज शाम के टाइम पे जब आपको क्रेविंग होती है, जब टेम्पटेशन होती है, हाई कैलोरी फूड्स आर ऑलवेज टेम्पटिंग. और जब हाई कैलोरी फूड्स ऑलवेज टेम्पटिंग होते हैं, वो जंक फूड आपके जब सामने आता है, it immediately satiates your hunger, it immediately satiates your body craving to fulfill those calories. Second reason, क्या पता शाम को आपको अनहेल्दी फूड खाने का एक पैटर्न बन चुका है. इसका मतलब क्या होता है? जब मैंने हर शाम को I have gone for that unhealthy food, maybe pizza, maybe burger, maybe Maggi, maybe cold drinks, बिकॉज मैंने पास्ट में वो पैटर्न रिपीट बहुत बार करा है, वो रेफरेंस बन चुका है एज अ नेगेटिव रेफरेंस. तो जब शाम होती है, my mind goes back to that reference and makes me convinced that you know what, I can repeat this pattern again. हम कोशिश करते हैं, विल पावर यूज करते हैं कि ना खाए, पर जितना विल पावर यूज करते हो, आपने देखा होगा विल पावर उतना ही काम नहीं आता है. Because willpower is not going to help you to control your urge to eat unhealthy food, to not eat unhealthy food in the evening. You need to change your references. You need to change your identity. Today in your mind, your identity is, you know what? When evening comes, it is okay for me to eat the unhealthy food because you've repeated that pattern over and over and over again. And this was the reason that I was also not able to control my urge to eat unhealthy food during the evening time. Evening time pe, your references, your past references, your negative references makes you repeat a pattern again. And also during the evening time, emotionally we are very vulnerable. I don't want to go into details of that particular subject. Emotionally we are very vulnerable. So for us to be able to fill our emotional needs somehow, maybe I don't know, आपको भूख से भूखी ऐसे लगती है कि आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स, कोई और स्ट्रेस, उसको मिटाने के लिए you take food as a source for you to be able to feel good about yourself. So I hope I have answered your question to some extent. With this, let's move to the second question that we have for today. So Chitali, what's the second question that we have? So the second question is from Deepak from Pune through Instagram. He's asking that it's been 3.5 years I started my own industrial automation business, but I have never been able to have a time period of earning consistent income. It's not that I'm not working hard, but somehow things never align to a point where I am generating consistent income, which is also the reason I'm not able to grow my business. So my question is, what do I need to learn to earn consistent income in my business? So Deepak, I'm sure आप वर्क हार्ड कर रहे हो अपने बिजनेस में, बहुत एंटरप्रेन्योर्स वर्क हार्ड करते हैं,
बट वर्किंग हार्ड डजंट मीन आपको सक्सेस मिलेगी गारंटीड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ दैट यू वांट टू हैव। व्हाई इज दैट? बहुत लोग वर्क हार्ड करते हैं, बट वो क्यों उनको सक्सेस नहीं मिल पाती, उसका सबसे बड़ा कारण है, अगर आपको भी कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करनी है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बिजनेस की बात नहीं है, किसी बिजनेस में दो मेजर चीजें होनी चाहिए फॉर एनी बिजनेसमैन, फॉर एनी एंटरप्रेन्योर टू जनरेट कंसिस्टेंट इनकम, एनी बिजनेस। वो दो मेजर चीजें हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स। It doesn't mean other functions of the business should not be performed, like your finance, operations, delivery and all that. But ये दो मेजर फंक्शन होते हैं टू अर्न कंसिस्टेंट इनकम। मार्केटिंग का मतलब होता है टू जनरेट लीड्स, टू बी एबल टू क्रिएट अ सेल्स फनल, और सेल्स का मतलब होता है टू क्लोज दोस लीड्स। बहुत एंटरप्रेन्योर्स सफर और नॉट बीइंग एबल टू फिगर आउट अ सिस्टम टू डू these two functions regularly. They don't have a proper system to generate constant flow of leads, which is only going to come through marketing. अगर constant flow of leads नहीं है तो आप सेल्स कैसे करोगे, क्लोज कैसे करोगे? बहुत एंटरप्रेन्योर्स का ये एक प्रॉब्लम, ये एक स्ट्रगल रहता है। मेरा भी एक्सपीरियंस इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ पिछले 5-5.5 सालों में काम करने पे रहा है कि बहुत लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका ना तो कोई सिस्टम है टू जनरेट कांस्टेंट फ्लो ऑफ लीड्स, व्हिच मींस दे डोंट हैव अ प्रॉपर मार्केटिंग चैनल। आस्क योरसेल्फ इन योर बिजनेस टुडे, how are you doing your marketing? What strategy that you have for you and your business to have constant flow of leads? Is your marketing just depend upon word of mouth? How are you getting inquiries? Or do you have a proactive marketing system, whether online or offline, with respect to your industrial automation business to generate this constant flow of leads? Only when you have constant flow of leads, then only you will have leads to be able to close people, to be able to close those deals. And when you will close those deals, then only you will be able to have consistent income in your business. So two things that you need to focus on, marketing and sales. Second part is how do you close those deals? So you need to have closers in your business who can close those deals. So I hope that answers the question. Let's move to the third and the last question that we have for today. So Chitali, what's the third question that we have? So this question is from Prashant from Noida through WhatsApp. He's asking that I work in the corporate sector and there are many times where I feel things that happen with me are completely unjust, especially by some of my colleagues who do not treat me right and pressurize me unnecessarily at workplace. I'm going through these issues from a long time and it has really started affecting my peace of mind and mental state. I cannot focus and also not able to sleep properly. How can I handle this situation? What's the name of the person? It's Prashant. Okay, Prashant. प्रशांत जो मैं बोलूंगा ना उसको एक बार नहीं बार बार सुनना। आपके साथ जो अनजस्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू बाय द कॉलीग्स और बाय द पीपल एट योर वर्क प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सोच रहे हो कि आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू फोकस, यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, ये उनकी वजह से नहीं हो रहा है, ये उनकी वजह से नहीं हो रहा है। व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट सपोज्ड टू अफेक्ट यू। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज टुडे वी हैव लैक ऑफ एबिलिटी टू मैनेज आवर ओन mental and emotional state, because of which whatever other people are doing to us, we get affected. Let me give you an example. हम आज कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग का मतलब ये है कि आज कोई भी हमें कुछ बोल देगा, कोई भी कुछ कर देगा, कोई हमारे साथ अनजस्ट कर रहा है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो we think that you know what, obviously Ravneet, I will get affected. Obviously Ravneet, I will get pissed off. Obviously Ravneet, I will get frustrated. Obviously Ravneet, I will get sad. It has become obvious. ये तो common है Ravneet. आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो ऑब्वियसली अगर कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कर देगा तो मैं तो अफेक्ट होऊंगा। इट इज कॉमन। द रीजन इट बिकम कॉमन इज बिकॉज वी आर लिविंग इन कलयुग। कलयुग में वी हैव गिवन द पावर नॉट टू अस, वी हैव गिवन द पावर टू द वर्ल्ड आउट देयर टू अफेक्ट अस एट एनी गिवन पॉइंट। कोई भी चाबी घुमाएगा, कुछ भी ट्रिगर करेगा और हम अफेक्टेड होते हैं। जब मैं ये बात बोलता हूँ तब आप सोचेंगे या बहुत लोग सोचेंगे कि रवि ये पॉसिबल थोड़ी ना है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव इमोशनल स्टेट, आई विल गेट अफेक्टेड एंड दैट इज वेयर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पावर व्हिच इज देयर विद इन अस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ या आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे बताओ, आपके बच्चे हैं, इफ यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, आर योर किड्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू इन योर लाइफ? टेल मी वन पर्सन हु इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू, योर किड्स, योर वाइफ, your parents, your friends. Tell me one person which is happening according to you. I'm telling you nobody is going to happen according to you. Which means अगर हर कोई एक बंदा भी नहीं है हमारी लाइफ में जो हमारे हिसाब से हो रहा है, इसका मतलब हमारे साथ चीजें नहीं होंगी तो हम इफेक्ट होते रहेंगे बार बार।
No, you got to understand that the power is not there on the outside. Power is there on the inside. The fact that we are suffering, the fact that your colleagues, your people, your workplace people can say something, do something, and it is affecting you because we have given the power, we should be there with us, to the people outside. Because हमारे लिए common बन चुका है. It is common to get affected. You know what is supposed to be common as a human being? What is supposed to be common as a human being is you being in charge of your emotional and mental state all the time, no matter what is happening outside you. No matter what is happening outside in the world, it cannot affect you. Now you might think it is not possible, and that is where this identity, this mental blocks need to change. You need to work with me and I will teach you how to become mentally tough, how to become emotionally strong so that nothing can affect you. Your question to me should be, Ravneet, is nothing affecting you today? Absolutely yes. That is the only reason which gives me the right for me to teach mental toughness. Nothing affects me. Not my partner can affect me, not my mom can affect me. कोई भी आज मेरे को affect नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि मैंने अपनी power अपने पास रखी है, किसी को देनी है. Because I'm a selfish human being. And being selfish is good. Because जब आप selfish नहीं रहोगे अपनी emotional और अपनी mental state पे control पाने के लिए, तब तक आप आसपास कुछ भी ठीक नहीं कर सकते. लोगों को भी ठीक नहीं कर सकते, लोगों को भी help नहीं कर सकते जब तक आप खुद help अपने आप को नहीं कर पाओगे. So your colleagues or their behavior is not affecting you. Your lack of ability to manage your own emotional and mental state is what is affecting you. The way you're taking their things, the way you are creating stories out of it, the way you're creating assumptions, the way you're creating meanings out of how people are treating you is what is affecting you. This is the hard answer, but this is the fact. Now your other question also should have been, how do I change this behavior by other people? You can only change this behavior of other people only when you learn first of all to not get affected. Then you need to learn how to influence people for them to change their behavior towards you. कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे. But the point is, at all given times, we need to be in charge of our emotional and mental state so that we do not get affected by what is happening outside us or how people are treating us with respect to the way they are in their life. So I hope that you have gotten some context from the response that I have given you to your question. With this, we come to the very end of this 5th episode of Relentless Talk with Ravneet. I hope this episode was worth your time. Make sure you leave your comment. Make sure you also ask your questions to me by sending me a Facebook message or Instagram or LinkedIn, or you can also post your question to my office WhatsApp number which is displayed on the screen. And I'm going to see you next week on the 6th episode of Relentless Talk with Ravneet.